हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्रिएट अ यूआई दैट यूजेस डेटा बाइंडिंग इन डॉट नेट मॉवी। तो यूआई क्रिएट करना है थ्रू डेटा बाइंडिंग करके, ठीक है। तो उसके लिए देयर इज़ अ टोटल 7 यूनिट्स। ओके, तो विल स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। मैं इन सब को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने मल्टीपल टाइम्स प्री रिक्विजिट बता चुका। तो विल स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ डेटा बाइंडिंग, ऐसे पूछ सकते हैं इंटरव्यू पर। तो आपको बोलना है डेटा बाइंडिंग लेट्स यू डिक्लेयर रिलेशनशिप बिटवीन योर डेटा एंड यूजर इंटरफेस कंट्रोल, ठीक है। दे ऑटोमेटिकली स्टे इन सिंक वेदर इधर एलिमेंट चेंजेस। डेटा बाइंडिंग्स कैन मेक योर कोड फास्टर टू रीड, easier टू मेंटेन एंड मोर टेस्टेबल। अभी डेटा बाइंडिंग क्या होता है कि डेटा बाइंडिंग का मतलब है कि हमने हार्ड कोड कुछ नहीं किया और डायनेमिकली हम डेटा को फिट करते हैं कहाँ पे, यूज़र इंटरफेस में। डेटा बाइंडिंग ऑफर्स अ वे ऑफ कपलिंग, okay, this is very important. Data binding offers a way of coupling your UI directly to data instead of associating your UI with code in UI's code behind. Okay, तो अभी हमने पिछले वीडियो में क्या किया था कि कोड बिहाइंड में लॉजिक लिखा था, ठीक है। उस हिसाब से हम कोड बिहाइंड से डेटा अपडेट करते थे। मीन्स यूआई में टेक्स्ट जैसे लाइक बटन में जो टेक्स्ट होता है उसको अपडेट करते थे कहाँ से, कोड बिहाइंड से, या लेवल को अपडेट करते थे कोड बिहाइंड से। बट डेटा बाइंडिंग में उसकी ज़रूरत नहीं है। डेटा बाइंडिंग में डायरेक्ट आप क्या करोगे, यूआई को डायरेक्ट बाइंड करोगे एंड व्यू मॉडल में लॉजिक लिखोगे। दैट आई विल एक्सप्लेन हियर लेटर। आगे, when the UI is bound to data, the UI automatically updates the data changes, staying in sync with the data. Conversely, if the user interacts with the UI, the data stay in sync with the UI, ठीक है। अब भी टू वे होता है, मतलब व्यू से आप डेटा अपडेट कर सकते हो या व्यू मॉडल से यूआई को अपडेट कर सकते हो, ओके, वाइस वर्सा। Example scenario, imagine you are working on an app that present user with the weather information for selected region or address. As user inputs a location, the app loads the weather forecast data from an external weather service and updates the UI. The UI and weather service data are tightly coupled by the XAML UI and XAML code behind. The weather service is already abstracted to its own class, but your UI relies heavily on the code behind to present the data to the UI. Sometimes, sometimes after your app is released, the weather service you use and announce that you are shutting down. Okay, anticipating this, you start looking for a replacement service. Of the services you are evaluated, you notice that they all input and output data in different ways because your UI uses code behind events for interaction with the service. Your UI experience could be impacted by these changes. It would be useful to change how the UI synchronize the weather updates from code behind events to data binding. This way, if a service change happens again, you have minimized the impact to your code. What you will do? This model demonstrates the difference between a code-based UI and data-bound UI and shows you how to use data binding to update the UI instead of code behind. Using a sample weather app, you will convert UI updates from code behind to data binding. Okay. What you will learn? By the end of this module, you will be able to use data binding to present data in UI and transform data when the UI types and data types don't match. Okay. Requirements of .NET MAUI development. This is already explained earlier. Development with the visual code, that is also explained. Okay, so next chapter में हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट यूनिट में कंपेयर एन इवेंट ड्रिवन यूआई टू डेटा बाउंड। तो ये सर सिर्फ इंट्रोडक्शन था, ठीक है।
तो इंट्रोडक्शन में ये समझाने की कोशिश की है कि जो डेटा बाइंडिंग होता है, ठीक है, वो क्या करता है, जो भी डेटा बाइंड करता है, इट्स नॉट टाइट कपलिंग, इट्स अ लूज कपलिंग। मीन्स आप कल को यदि कोई सर्विस आपने एसोसिएट की है या रिपोजिटरी जोड़ी है, उसको आप विदाउट डिस्टर्ब द यूआई आप सर्विस रिपोजिटरी को चेंज कर सकते हो, क्योंकि वो सब इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू द यूआई। कहाँ पे वो होती है, व्यू मॉडल से कनेक्ट होती है। जब हम MVVM पैटर्न पढ़ेंगे, मॉडल व्यू, ओके, मॉडल व्यू मॉडल्स पैटर्न्स, राइट, MVVM, तब हम उसे पढ़ेंगे, मॉडल व्यू मॉडल्स, MVVM पैटर्न, ओके, मॉडल व्यू मॉडल। सो विल एक्सप्लेन लेटर। और एक क्लास हम ऐसे करेंगे जिसमें पूरे डिज़ाइन पैटर्न को कवर करेंगे। नेक्स्ट यूनिट है कंपेयर एन इवेंट ड्रिवन UI to data bound UI. Okay, compare an event driven UI to a data bound UI. An event driven user interface is designed around the events a control exposes. These events can be associated with event handler code that's invoked when event is triggered. For example, let's say you have a button that, when clicked, performs a long running operation. The event handler assigned to the clicked event could start the operation and then set the button's isEnable property to false, preventing the buttons from being clicked again while the operation is running. Okay, a data bound UI uses data binding to present and interact with data. Properties of controls are bound to the data object's properties, and those bindings can detect changes in the properties. Using the previous example, consider the button that performs a long running operation. Instead of disabling the button in code behind, the is enabled properties bound to the data object is busy property. Whenever the data object become busy, the button enabled state is automatically changed to match. Pros and cons of using events and code behind. Using the controls event handler with code behind is a quick and convenient way of designing the app logic of your UI. You use code to call service to get data, perform operation on that data, and interact with the controls on the page. The code is used to keep the UI and data synchronized. Consider the example of a weather service application. The following XAML fragment contains a simple UI button. The user selects to get the latest data and update the UI with the humidity. Okay, so we use the vertical stack layout view. Inside we have a horizontal stack layout, and inside that we have a three controls: label, entry, and button. Once you tap the button, which have an event called refreshed weather button underscore clicked. Okay, so once you refresh it, and this is the label is humidity, text is humidity colon. Okay, x name means code behind में हम इस वैल्यू को चेंज करेंगे, ठीक है। देयर आर थ्री नेम्ड कंट्रोल्स इन द एग्जांपल: एंट्री, बटन एंड लेबल. The refresh weather button has an event handler. Okay, is an event handler declared the clicked event. When the button is clicked, the event handler queries a weather service for the latest weather forecast using the data entered in the postal code entry control and set the humidity levels, text the current humidity. Okay, so refresh weather button clicked event जो हमने यहाँ पे बनाया था, उसका कोड बिहाइंड क्या है कि वेदर सर्विस डॉट लोकेशन इज इक्वल टू पोस्टल कोड डॉट टेक्स्ट, वेदर सर्विस रिफ्रेश और ह्यूमिडिटी टेक्स्ट हम इसमें डाल देंगे. In this one event handler, three controls are tightly coupled to each other and the data through the code behind.
The design works great for small UIs, but as soon as the UI become complex, maintaining a tightly coupled code behind can become troublesome. If you delete or change a control, you must clean up any code using those UI controls, which could include the event handler. If you decide to redesign the UI, you will have lots of code to refactor too. And when the backing data structure changes, you have to dive into the code of each UI to stay in sync. Okay, डेटा बाइंडिंग हेल्प्स। तो पहले इसका प्रॉस कॉन्स क्या देख लेते हैं। तो इसका प्रॉस क्या है कि छोटे यूआई, जैसे हमारा छोटा एप्लीकेशन है, करें तकरीबन 1 या 10 पेज का, और ज़्यादा कंट्रोल्स नहीं है पर पेज में, तो उस समय इवेंट्स परफेक्टली काम करेगा। बट क्या होगा यदि आपके पेजेस 40, 100, 150 पेजेस हैं एप्लीकेशन में, और हर पेज का कंट्रोल और यूआई काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, मल्टीपल कंट्रोल्स एक पेज में और मल्टीपल डिपेंडेंसी है, तो उस समय क्या होगा यदि कल को कोड चेंज करना पड़े, कल को यूआई चेंज करना पड़े, या सर्विस चेंज करना पड़े, या रिपोजिटरी चेंज करना पड़े, तो आपको हर यूआई को चेक करना पड़ेगा, कोड बिहाइंड में जाके उसके इवेंट को हटाना पड़ेगा, उससे जुड़ी हुई सर्विसेज को चेंज करना पड़ेगा। तो एवरी पेज में आपके साथ डिपेंडेंसी हो गया, एवरी पेज यू हैव टू टच इट and check and deep dive what is the logic and how it was working earlier. तो काफ़ी cumbersome मीन्स वर्क रहेगा आपके लिए। तो make the work simple, use data bindings. Okay, so data binding helps क्या है, you can implement data bindings in XAML or code, but they much more common in XAML, where they help to reduce the code behind file size. Obviously, when you replace procedural code in event handlers with declarative code or marker, the app is simplified and clarified. Because the bindings don't require code behind, you can easily create, altered or redesign the UI to fit how you want the to represent the data. Let's take the same example as in the previous section, बट अपडेट इट टू यूज़ डेटा बाइंडिंग। अभी क्या किया हमने कि XAML में ही क्या कर दिया है, बाइंडिंग लगा दिया है। पहले एंट्री बाइंडिंग लिख के कर्ली ब्रैकेट के अंदर बाइंडिंग लिखना है, फिर प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, लोकेशन एंड मोड। यहाँ मल्टीपल मोड होते हैं जो हम अभी नीचे बताएंगे। तो वन वे टू सोर्स मीन्स ये कहाँ से अपडेट होगा, फ्रॉम यूआई से बिजनेस लॉजिक को अपडेट करेगा व्यू मॉडल को। ओके, बटन के लिए भी हमने कमांड लिख दिया है, ठीक है। कमांड पहले क्लिक था, तो यहाँ कमांड यूज़ किया है, फील्ड बाइंडिंग रिफ्रेश वेदर, ठीक है। और कोड बिहाइंड में लॉजिक लिखने की ज़रूरत नहीं है, टेक्स्ट को भी बाइंडिंग किया है। तो लेबल तो सिर्फ हार्ड कोडेड एक टेक्स्ट है, एंट्री में इनपुट लेंगे, बटन में हम क्लिक इवेंट रहेगा, मतलब हम प्रेस करेंगे बटन को एग्जीक्यूट करने के लिए, रिफ्रेश वेदर। और लेबल क्या है, अपडेट करेगा क्या, वैल्यू विच इज़ कम्स थ्रू वंस यू क्लिक द बटन, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि सब जगह बाइंडिंग यूज़ किया है। यू कैन स्पॉट द प्रॉपर्टीज दैट आर डेटा बाउंड, दे यूज़ द XAML एक्सटेंशन सिंटेक्स बाइंडिंग। ये है बाइंडिंग, जब भी करते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर बाइंडिंग लिखना होता है। फॉर द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, डोंट वरी अबाउट द स्पेसिफिक येट, वी कवर दैट लेटर इन दिस मॉडल। तो थोड़ी देर में हमें एवरीथिंग पता चल जाएगा क्या क्या है concept. The same three controls are declared in the XAML, but none of them are named because named isn't required. X colon name लिखा हुआ था राइट पहले, तो वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंट्री कंट्रोल, द कंट्रोल टेक्स्ट प्रॉपर्टी इज बाउंड टू अ प्रॉपर्टी नेम्ड लोकेशन। बटन कंट्रोल, the buttons command property is bound to a property named refresh weather. Command is property on the button that invokes code when the button is pressed. It's an alternative to the clicked event that's used in data binding. Label control, the text property is bound to a property named humidity. In this simple UI, all the code behind is eliminated. Removing all code behind isn't the point of the data binding, even though it's possible. Code behind still has its place.
how much data binding you implement is up to you. ठीक है. Now the UI is loosely coupled to a data object. Why is it loosely coupled instead of type coupled? ऐसे भी बोल सकते हैं. So because of the way bindings are evaluated, each control has a binding context property. If the context isn't set, the parent control's context is used and so on until the root of XAML is evaluated. When bindings are evaluated, the context object instance checked for the required properties like the labels controls text binding to the context humidity property. If humidity does not exist on the context, nothing happens. Because the UI is loosely coupled, you can redesign the UI without worrying about breaking code. However, you can break functionality. For example, you can delete the button and still app still compiles and runs. But you don't have a way refresh the weather. On the other hand, you could replace the entry and button controls with single search bar controls. This controls lets you enter the text and invoke the command. तो तरीके कई हैं कोड लिखने के. ओके. मेन कॉन्सेप्ट है बाइंडिंग्स जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे. तो बाइंडिंग्स कभी भी क्या करेगा, एरर थ्रो नहीं करेगा. यदि लेट सपोज आपने इस लाइन को हटा दिया बटन को, तो ये फिर भी चलेगा. भले इसका कोड आपने लिख रखा है रिफ्रेश वेदर का कहीं पे, प्रॉपर्टीज़ बना रखी है व्यू मॉडल के अंदर, और इसको आपने यूआई से हटा दिया, फिर भी ये चलेगा क्योंकि हमारा टाइटली कपल्ड नहीं है. ठीक है. तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है. इसलिए कभी भी आप यूआई को चेंज कर सकते हो विदाउट चेंजिंग योर बिजनेस लॉजिक, और बिजनेस लॉजिक को चेंज कर सकते हो विदाउट चेंजिंग यूआई. हाँ, मेक श्योर यदि यूआई में रिफ्रेश वेदर लिखा है और सर्विस में ऐसा रिफ्रेश वेदर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, तब वो थ्रो करेगा क्योंकि दिस बटन लुक्स फॉर दिस कमांड. ये कमांड ही नहीं है कहीं. राइट. तो कोशिश होनी चाहिए कि जो भी हमने बाइंडिंग किया है दैट वेरिएबल शुड बी देयर. Okay, the UI is loosely coupled. You can redesign the UI without worrying about breaking code. However, you can break functionality. इसमें साफ लिखा है, you can break the function. For example, you can delete the button and app still compiles and runs. Okay, you can use search bar text. Search bar is a one control. Text binding location. Mode is one way to source. Search command binding refresh weather. As you can see, using data binding in your design can help you evolve and change UI without much work. It keeps the UI synchronized with the data automatically. The app logic is separated from the UI. Check your knowledge. Which of the following statements describe how data bindings improves the UI? Okay, you never have to write code related to UI again. The UI is automatically kept in sync with data. Data bindings. The UI is automatically kept in sync with data. In an app that retrieves the latest weather, a label control that represents the temperature is bound to the data object. When the user presses the get weather button, trigger the clicked event. What would the event handler code to do the to do update the UI? What would the event handler code do to update the UI? Okay, from event handler to nothing. Okay, the from invoke the weather service and set the temperature levels. From event invoke the weather service and update the weather data object with latest information. Yes. Now check. Was that true? Use data bindings in XAML. Okay. Use data bindings in XAML. तो इसमें you can declare data bindings in either code on code और in XAML. दो तरीके होते हैं, याद रखना. या तो आप कोड में बाइंडिंग्स को लिख सकते हो या XAML में using markup extension. This you need discuss the later because it's the most common way to create bindings. There are a couple of reasons to prefer XAML. First, most people consider bindings to be part of their UI code because the bindings get data for the UI
to display. Second, there is a markup extension named binding that makes it easy to do. What are the data bindings? Question. A bindings ties two properties together. Okay, bindings ties two properties together. One property is in your UI and other is in your data model object. If the value either property changes, the binding object can update the other one. In other words, bindings are intermediary object that synchronize your UI and data. Okay, if you say bindings are intermediary object that synchronized UI and data. You use the term source, okay, and target to identify the two objects involved. Source. A source can be an object of any type. In practice, you typically use a data object as a source. You need to identify the property on the data on the source object to participate in the binding. You identify the property by setting the path property in the binding. ओके पाथ से पता चलता है कि सोर्स कहाँ है. पाथ में आपको सेट करना पड़ेगा सोर्स की मतलब एड्रेस को. टारगेट कहाँ आपको अपडेट करना है. ओके द टारगेट इज अ प्रॉपर्टी दैट इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ स्पेशल प्रॉपर्टी कॉल्ड बाइंडिंग प्रॉपर्टी. द ऑब्जेक्ट विद द बाइंडिंग प्रॉपर्टी मस्ट डिराइव फ्रॉम bindable object. All of the controls provided in .NET MAUI derived from bindable object, and most of their properties are bindable properties. Okay, so all of the controls provided in .NET MAUI derived from bindable objects से आता है, and most of their properties कहाँ से bindable properties. The following diagram illustrates how a binding is an intermediary object between two properties, source and target. Source any object, any public property. Bind किया. Target क्या है? Bindable object, bindable property. How to create a data binding XAML? Let's look at simple binding created in XAML by using binding markup extension. It's binding the weather service.humidity property of the source to text property of UI control. तो वर्टिकल स्टैक लेआउट हमने लिया हुआ है. अब इसमें हमने सोर्स डिक्शनरी के अंदर ओके सर्विस कॉलन वेदर सर्विस एक्स कॉलन की माई सर्विस बनाया है. अब माई सर्विस को हम कहाँ कॉल करेंगे? यहाँ पे कॉल करेंगे. ठीक है, तो ये क्या है? रिसोर्स डिक्शनरी. कि यदि आपको मल्टीपल कंट्रोल्स में यूज़ करना है तो एक बार एक कॉमन आप रिसोर्स डिक्शनरी बना लो. इसके बारे में पढ़ेंगे. फिर उसकी नेम को आप एज अ स्टैटिक रिसोर्स करके यहाँ पे पास कर सकते हैं. तो लेबल क्या है? ह्यूमिडिटी, इसको अपडेट करना है. सोर्स क्या है? माई सर्विस. ठीक है, तो जब भी ये पेज हिट होगा सर्विस कॉल करेगा. सर्विस से जो भी डेटा रिटर्न आएगा वो ह्यूमिडिटी में अपडेट हो जाएगा. The binding source is an object instance of the weather service type. An object instance of the weather service type. The instance is reference to the static resource XML extension which point to an object in stack layout resource dictionary. Okay, resource dictionary. The path points to a property named humidity on the weather service type. The path is the first unnamed parameters on the bindings, and path is equal to syntax can be omitted. These two bindings are equivalent. Okay, पहला है path is equal to humidity, that's also correct, and without path equal इसको हम हटाए तो humidity भी लिख सकते हैं. So both are correct. The binding's target is label. Okay, this is the label is a binding target. Okay, the label controls. The controls text property. When the UI is displayed, the binding XML extension create a binding between service and label. This is the service and this is the label.
The binding reads the weather service dot humidity properties value into the label dot text property. Use another control as a binding source. One use features of binding is being able to bind the other controls. The following example is simple demonstrate. We use the label target label text to rotate yellow color. Slider, this is the slider width request maximum is 360 degree. Okay, value rotation बाइंडिंग किया रोटेशन को मोड लिया वन वे टू सोर्स एंड सोर्स क्या है एक्स रेफरेंस किसका रेफरेंस दिया टारगेट लेवल का तो जो भी वैल्यू हमें स्लाइडर से मिलेगी ठीक है स्लाइडर से मिलेगी उसको हम कहाँ कर देंगे इसमें पास कर देंगे रोटेट कर देंगे राइट ओके अब देखते हैं कैसे द स्लाइडर डॉट वैल्यू प्रॉपर्टी स्लाइडर डॉट वैल्यू property is bound to the label rotation property label rotation property but in a different way than previous explained the property is using binding mode one way to source which reverse the typically binding mechanism instead of the source updating to the target okay one way to source update the source when the target change okay this is our target and this is our source one way to source one way to source okay in this example when the slide moves it updates the rotation of the label on the slider's values as illustrated in the following animation this is the one the typical scenario for binding controls to one another is when a control, usually a collection control such as collection view or carousel view, has a selected item that you want to use as a data source. In this example of page displaying the weather forecast, you might have a collection control a collection view present a 5-day forecast. When the user selects a day in the list, the details of that weather forecast are displayed in other controls. If the user selects another day, the other controls are again updated with the selected day's details. In .NET MAUI 10, list view is deprecated. Okay, list view नहीं है. In favor of collection view. Use collection view for displaying list of data in new application. Use the same resource across multiple bindings. The previous example of the previous example demonstrate using a static resource as a source for a single binding. That source can be used in multiple bindings. Here is an example of declaring a binding across three different controls all bindings to the same object and property path though some omitting the path property okay यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि VM कॉलन सिंपल वेदर ऑब्जेक्ट की बना लिया ठीक है तो यहाँ पे हम मल्टीपल बाइंडिंग्स यूज द सेम सोर्स अक्रॉस मल्टीपल बाइंडिंग्स ठीक है सो ये हमने जैसे बताया था कि ऊपर में हमने सोर्स बना लिया है ठीक है इस ऑब्जेक्ट को हम कॉल कर रहे हैं अंडर दी सोर्सेस वर्टिकल लेआउट डॉट सोर्सेस और उसका नाम दे दिया है की का माई वेदर सर्विस अब जब भी हमें किसी कंट्रोल में इसे कॉल करना है तो सोर्स इज इक्वल टू स्टैटिक रिसोर्स ओके फिर उस सर्विस का नाम हमें पास ऑन कर देना है तो सब जगह ही अपडेट हो जाएगा जैसे एंट्री में इसकी वैल्यू चाहिए लेबल में चाहिए तो हमने सिर्फ एक बार इसको डिक्लेयर किया अंडर द सोर्स और उसके रेफरेंस को यूज़ कर लिया यू डोंट हैव टू यूज़ द सेम पाथ व्हेन यूजिंग द सेम सोर्स ओके एक ही बार में काम हो गया rarely do you represent a single pieces of data from a source though it could happen usually you have several controls using different pieces of data from the same source this situation is so common that the binding object class has a property named binding context
that works as a source for data binding. Remember that .NET MAUI controls inherit from the data binding object. Okay, class. So the .NET MAUI controls have the binding context property. Setting the binding sources is optional. A binding that does not have source set automatically search the XAML visual tree for a binding context, which is set in the XAML or assigned to a parent element by code. Bindings are evaluated following this pattern. If the binding defines a source, that source is used and searching is stopped. The binding's path is applied to the source to get a value. If source isn't set, search begins for a binding sources. The search begins with the target object itself. If the target object binding context isn't null, the search is stopped and binding's path is applied to the binding context to get a value. If binding context is null, then the search continue. The process continues until it reaches the XAML root. The search ends by checking the binding context of the root for a non-null values. If no valid binding context was found, the binding has nothing to bind against and does nothing. Okay, it's common to set the binding context at the root object level to apply the entire XML. There are one last convenient features that's worth mentioning. Bindings watch for changes to the object reference of their sources. This works even for bindings that uses binding context as their source. If the source or binding context is reassigned to another object, the bindings grab the data from the new source and update their target. Check your knowledge. Which is true of the source object in .NET MAUI? It can be any type, yeah. It must be bindable object. It must be a subclass of you. Okay, it should be binding object. Which is true of the target property in .NET MAUI bindings? It can be a public property. It must be a binding property. It must be a It must be a public property. If all the if all the bindings on controls within a grid need the same source object, what is the safest strategy to set the source object once? Set the pages binding context property, set the pages source property. Okay, grid है right? Grid पे करो फिर set the grid's binding property. Okay, it can be any type. Okay, which is true of source object? It can be any type. Okay, which is true for the target property in .NET MAUI? The target property must be bindable property. Okay, if all the bindings on the controls within a grid, so setting the binding content on the grid. Okay. Replace code with the .NET MAUI bindings. So यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? There is a code. Okay, there is a application to best to clone or okay. Let me do that. तो एक तरीका है या तो इसको क्लोन कर लो या दूसरा तरीका है कि इस कोड को लिखो. तो इसमें हुआ क्या है कि इस एप्लीकेशन में जो इसमें डिमॉन्स्ट्रेट किया है, एक मेन पेज है, उसका XAML.css, ठीक है, सर्विस बनाया है जिसके अंदर वेदर सर्विस है, मॉडल के अंदर वेदर डेटा है और मॉडल्स के अंदर वेदर टाइप भी है. ठीक है, हम क्या करते हैं, सिंपल सबसे पहले एप्लीकेशन ओपन करते हैं. तो इसमें हमने क्या किया था, वर्टिकल्स पढ़ा था लास्ट टाइम. इसको क्लोज ऑल कर दो. पहले तो एक फोल्डर बना लो. फोल्डर बना लो मॉडल का. मॉडल लिख लो या मॉडल्स लिख लो. ठीक है,
मॉडल्स, यहाँ बनाए, ठीक है। दूसरा बनाना है सर्विसेस, ठीक है। और एक और बना लेते हैं पेजेस, काट के करते थे पेजेस, व्यू कर सकते थे, ब्रेक कर सकते हैं व्यू मॉडल्स। ये हो गया परफेक्ट अपना एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखते हैं पेजेस है, मॉडल है, व्यू मॉडल है, सर्विस है। रिपोजिटरी भी डाल सकते हैं इन फ्यूचर, रिपोजिटरी भी लिख के रख देते हैं, रिपोजिटरी, ठीक है। रिपोजिटरी में डेटाबेस या डेटाबेस कर लो इसको, ये रिपोजिटरी इज फाइन, लोकल डीबी। अब सबसे पहले पेजेस के अंदर, ठीक है, एक नया पेज बनेंगे, उसका नाम रखते हैं, पेज का नाम रख देते हैं बाइंडिंग पेज, पेज। Example, binding example, okay, just a minute, binding page, ठीक है, binding page, बाइंडिंग पेज में ग्रिड को कॉपी कर लेते हैं पूरा की पूरा, ठीक है। एक्स नेम लिखा हुआ है इसमें पूरा, ठीक है। इसमें इतनी सारी इमेजेस हैं इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले रिसोर्स में जितनी भी इमेजेस हैं उसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ट्रेवल इन फाइंडर में जाके इसमें जितने भी आपने डाउनलोड किए अभी इमेज इतने किए, राइट, 3 इमेजेस किए, कॉपी कर लो इसको, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो। ठीक है, क्लाउड है, क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब यहाँ दिख रही है। अभी क्या करना है, अब हम जाएंगे मॉडल पे, मॉडल्स हमने बनाया होगा यहाँ पे, इस मॉडल के अंदर जाएंगे,
मॉडल में कुछ भी नहीं है तो क्लास बनेंगे वेदर डेटा, ये बन गई क्लास। और ये क्या है कि स्ट्रक्ट बनाया हमने, वेदर डेटा इन टेम्परेचर विंड वेदर टाइप। वेदर टाइप तो बना नहीं है तो वेदर टाइप भी बना लेंगे। मॉडल के अंदर फाइल क्लास वेदर टाइप इज आल्सो डन। उसके अंदर डालेंगे सनी एंड क्लाउड, क्या डालेंगे सनी एंड क्लाउड, और इसको इनम बना देंगे। मॉडल तैयार है। अब हमें सर्विस पे जाना है। सर्विस के अंदर हमें बनाना है वेदर सर्विस। वेदर सर्वर बना हुआ है इसमें, तो वेदर सर्वर क्लास बनाएंगे। वेदर सर्वर सब जगह लिखा है तो वेदर सर्वर ही लिखते हैं। और उसके अंदर हमें बनाना है इंटरनल स्टैटिक क्लास। ओके, दिस इज इंटरनल स्टैटिक क्लास बनाया। जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इनम को कॉल करेंगे टोटल वेदर टाइप्स, डिले 2 सेकेंड टू सिमुलेट टॉकिंग टू रिमोट सर्वर एंड रैंडम शेयर 30, जो भी है रैंडम नंबर हमेशा ये ट्रिगर करता रहेगा। ओके, जब भी हम इसे हिट करेंगे पोस्टल कोड के साथ। तो पोस्टल कोड फेक है, इसका हम कहीं पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इस सर्विस को एक डमी सर्विस बनाई है जो 2 सेकंड के पॉज के बाद एक रैंडम टेम्परेचर कंडीशन ह्यूमिडिटी डाल देगा, सब रैंडम। हम जाते हैं शेल पे, यहाँ लिख देंगे एप्लीकेशन का पेज का नाम है बाइंडिंग पेज। हम एप्लीकेशन को रन करते हैं एंड्रॉयड डिवाइस पे। कुछ इशू है यहाँ पे।
कोड चल गया। एरर दे रहा है कि इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन शेल कंटेंट, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। कंटेंट टेम्पलेट ही लगा दो, रन कर दो फिर से। ओके, नाउ यू कैन सी हियर, दे सकते हो वेलकम टू द वेदर ऐप। अभी इसमें एक नंबर डाल देते हैं 490006। रिफ्रेश किया, 2 सेकंड बाद रिजल्ट आ गया। लेट्स सपोज यहाँ 0 डालता हूँ, फिर भी आएगा, क्योंकि लेना देना तो कुछ है नहीं उसका। हर बार वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये बना एक ऐप, ठीक है। कोड एक बार समझा देता हूँ फटाक से। तो आपको यदि आपने पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपको ये पता है कि हमने स्टार्ट किया था स्क्रैच से, ठीक है। तो शेल पढ़ा था, माई प्रोग्राम पढ़ा था, मॉवी प्रोग्राम पढ़ा था, ठीक है। तो उसको एक बार और देख लेते। जब भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो मेन पेज होता है, फिर ऐप शेल होता है, ऐप XAML होता है। तो ऐप XAML इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, और स्टार्टिंग कहाँ से होता है? नेटिव से होता है। नेटिव में पहले कोड हिट करता है, कोड हिट करता है कहाँ पे? मेन एप्लीकेशन में, एंड्रॉयड के लिए। जैसे ये मॉवी एप्लीकेशन हिट होता है, ये कहाँ जाता है? मॉवी प्रोग्राम में जाता है, जो कहाँ पे है? मॉवी प्रोग्राम। यदि यहाँ चेक करो तो मॉवी प्रोग्राम कहाँ लिखा है? इधर लिखा है, राइट। नॉन में मॉवी प्रोग्राम के अंदर में क्या लिखा है? क्रिएट मॉवी। और क्रिएट मॉवी में क्या हिट करते हैं? ऐप को। और ऐप कहाँ है? ऐप डॉट XAML कहीं लिखा होगा इधर। ऐप डॉट XAML में क्या होता है? रिसोर्स डिक्शनरी होता है। रिसोर्स डिक्शनरी कोड बिहाइंड में क्या होता है? विंडो क्रिएट करते हैं, किस चीज़ के लिए? पेज के लिए। और वो क्या है? ऐप शेल। और ऐप शेल के अंदर क्या है? ऐप शेल बताता है कि कौन से पेज में राउट करना है। तो हमने जो पेज लिया वो कौन सा पेज था? बाइंडिंग पेज। तो बाइंडिंग पेज को हमने पहले क्या किया? लोकल नेम स्पेस दिया उसको, ठीक है, पाथ दिया यहाँ पे, और उसको यहाँ पे रेफरेंस किया। ये है भाई डेटा टेम्पलेट, इसको उठाओ, और इसको राउट कर दिया। जैसे ही ऐप शेल कंटेंट हिट होगा वो नेविगेट करेगा यहाँ पे XAML पेज में, ठीक है, बाइंडिंग पेज में, और कोड बिहाइंड कोड, ठीक है। अब समझते कोड को। जो ये एरर्स आ रहा है, दैट समटाइम्स इट्स फाइन, क्योंकि ये मॉवी का इशू है ही, पहले भी था और अभी भी है। सबसे पहले देख लेते हैं कि एक ग्रिड लिया, पेरेंट ग्रिड, कंटेंट पेज के अंदर पेरेंट ग्रिड, और ग्रिड के अंदर स्टैक लेआउट, लेबल है, मल्टीपल कंट्रोल्स हैं, और जिसमें हमने क्या किया? अभी कोड बिहाइंड लॉजिक लिखा है। यदि देखोगे तो ये दिस ऑल आर कोड बिहाइंड लॉजिक, ठीक है। हमने एक सर्विस हिट की, सर्विस हिट करने के बाद जो भी डेटा आया उसको हमने यहाँ पे टेक्स्ट को अपडेट कर दिया, दैट्स ऑल। अब क्या करना है कि इस सर्व कोड बिहाइंड को हटाना है, क्योंकि बाइंडिंग यूज़ करना है, राइट। तो बाइंडिंग यूज़ करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले क्रिएट अ बाइंडिंग्स, ओके। तो बाइंडिंग्स यूज़, ओके, जस्ट अ मिनट, बाइंडिंग यूज़ की है क्या, देख लेते हैं। बाइंडिंग लिखा है कहीं पे? नहीं लिखा है, सिर्फ पेज का नाम है बाइंडिंग। तो यहाँ पे हमें बाइंडिंग्स यूज़ करना है अभी। तो बाइंडिंग के लिए क्या करेंगे? ये जो कोड है इसको कॉपी और पेस्ट कर देंगे। सब ले स्टॉप करो। कोड बिहाइंड पे जाके ये ग्रेड का ग्रेड पूरा की पूरा ग्रेड हमने रिप्लेस कर दिया। कितना सरल हो गया कोड, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इनकी ज़रूरत नहीं है, हटा दो इसको। अब ये कोड कहीं लिखना तो पड़ेगा, ये टेम्परेचर बाइंडिंग्स जो भी बनाया है हमने, ये कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे?
सबसे पहले तो इस कोड को रन करके देखते क्या एरर आता है। हमने तो बाइंडिंग कर दिया बट ये प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं है। लेट्स सी, रन द कोड। कोड रन हो गया है विदाउट एनी इशू, बट कुछ भी नहीं दिख रहा। क्या दिख रहा है? सिर्फ लेबल दिख रहा है। लेबल्स फिजिबल है, ठीक है। इशू कुछ भी नहीं है क्योंकि बाइंडिंग्स लिखा जरूर है मगर दैट प्रॉपर्टी इज नॉट देयर। दैट्स फाइन। गो बैक। Okay, just a minute. दिस इज लेबल प्रॉक्सी। ओके, इसको हमें रिप्लेस करना था। नेक्स्ट इस कोड को बस, दैट्स इट। अभी चेक करते हैं। Control chat. There is no bindings. Let me. Okay, where is this? No, run this code. Okay, value is not updated because binding is there, but we are not passing the values. Okay, data is coming here till here. See, data is coming. We have a data, but this is not bind. Okay. So set the binding context. Disable the button. Okay, that's fine. That's fine. And this is okay. Done. This is also done. Okay, adding label. That's done. Label is done. Label is done. Here, run the app and select the refresh button. App works almost like original. But my question is, this is not bind, right? This is not bind yet.
Okay, distributor. Okay, this is fine. Should work. Something's wrong. Temperature. Okay, that's fine. Binding. Should bind. Maybe something is going wrong here. Hmm. Problem is C. The problem is weather data. We are not binding it. So binding नहीं किया था, इसलिए ये एप्लीकेशन रन नहीं हो रहा था. ठीक है. तो जो भी वैल्यू हम डालते रहे, रिफ़्रेश करते थे, तो ये वैल्यू यहाँ अपडेट नहीं हो रही थी, क्योंकि ये बाइंड नहीं हुआ है किससे, प्रॉपर्टीज से. सो यहाँ लिखना पड़ेगा बाइंडिंग कॉन्टेक्स्ट. जैसे ही आप बाइंडिंग कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, अब रन करते हैं एप्लीकेशन, दैट विल वर्क. यहाँ मैंने 2 डाला, हिट हुआ. हिट होने के बाद जैसे ही ये रिफ़्रेश होगा, देखिए वैल्यू आने लगी. सो क्यों नहीं आ रहा था पहले, क्योंकि बाइंडिंग डेटा नहीं था उस पर. व्हाट इट, इसको रिफ़्रेश कर दो तो 3 बार. ओके, सो यहाँ पे वैल्यू आ रही है. ओके, स्टॉप दिस. तो एक बार कोड को समझा देता हूँ. तो हमने क्या किया है कि पहले ये कोड कैसा था कि सब में एक्स नेम लिखा हुआ था. ठीक है, यहाँ पे एक्स नेम लिखा हुआ था. उसके बाद हमने क्या किया, इसको हमने क्या किया है कि उसको बाइंडिंग कॉन्टेक्स्ट से रिप्लेस कर दिया है. अब बाइंडिंग कॉन्टेक्स्ट का है, यहाँ बाइंडिंग है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है. ठीक है, और ये सब वहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज़ अंडर दिस मॉडल्स, weather model. Okay, weather type. Okay, so this is binding now, and inside the service we have this values which is under the weather data. Okay, so this is the beautification of the bindings. So you don't need to write anything behind the code. Okay, this is also we can shift it. ये ज़रूरी नहीं है लिखना, native and ये सब. This is also we can move into the few models here. Inside we can write. एक हमें बाइंडिंग पेज व्यू मॉडल बनाना पड़ेगा, और उसके अंदर एक प्रॉपर्टी बना देंगे रिफ्रेश बिजी, और उसको हम अपडेट कर देंगे कंस्ट्रक्टर में, या जब भी ये प्रॉपर्टी फिट होगी उसके अंदर के लॉजिक में प्रॉपर्टी के अंदर फॉल्स ट्रू कर देंगे. ठीक है. नेक्स्ट यूनिट है डेटा बाइंडिंग विथ मिसमैच टाइप्स. ओके, सो क्या होता है कई बार कि आप इंट के लिए बाइंड कर रहे हैं मगर आपने स्ट्रिंग डाल दिया. ऐसा भी हो सकता है. समटाइम्स द डेटा you are using does not match the data type of control property displaying the data. For example, you might have a monetary value stored in decimal type you want to display on a label formatted as a currency. A more complicated example would be the weather app presented in the model. An image is supposed to be displayed based on the weather forecast, sunny or cloud enumerations value, but you can't bind the source in enumeration values to the target image property. This unit looks at
ways you can convert data. Okay, string formatting. A common type mismatch is an intrinsic type that you want to display as a formatted string, like when you want to display parts of data time value, or you want to format a decimal type as a currency. Suppose you want to display the amount due on a bill, and you have this property on your data object. So public decimal bill amount. Okay, the amount on ends up being 22.0304. You might use two labels controls to display some text and dollar amount as demonstrated in the following snippet. So what we are doing is there's a label on margin binding values to the bank. Okay, this output a string to the UI that looks like on 22.0304 to the bank, but it's missing the currency symbol, and there might be too many or too few decimal placed on the local currency. Normally you had passed the value as a string with a C format specifier in code like. So what you will do is string dot format. Okay, then you will use inverted curly bracket 0 colon C bill amount. But to use formatting in data binding, you have to either have the data object provide the formatted string to you as a different property, or intercept it somehow and format it yourself. Fortunately, the .NET MAUI bindings provide a way to formatting a string with the string format binding property. The format string follows the same rules as the string dot format method, and close the format string in single quotes so that the XAML parser does not get confused by the curly braces. So binding bill amount string format is equal to u on C 0 colon C to the bank. मतलब क्या है कि जो बिल अमाउंट आएगा वो इसमें फीड हो जाएगा. ठीक है. Consider the following example. Okay, this is the example you on. ओके सो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लेआउट में हमने क्या किया, सिर्फ बाइंडिंग किया, और दूसरे में क्या किया, स्ट्रिंग फॉर्मेट का यूज़ किया, और उसमें क्या लगा दिया है 0 colon C टू द बैंक. अब C क्या है, करेंसी को डिनोट करता है. तो जब भी ये हिट होगा वो क्या आएगा, $22. काफ़ी सिंपल है, स्ट्रिंग फॉर्मेट का यूज़ किया. The example using the string format binding property is simple than the other example, and you have the access to the .NET powerful string formatting custom type conversion. Okay, the string format binding property is convenient when displaying a value as a string, but not when you want to convert something like a color or image from another type. In this case, you need to write custom conversion code. Suppose you are prompting the user to choose a password, and you want to use a color in the UI to indicate password strength. Okay, there are three levels of strength: weak, good, and strong. The strength is based on how many characters are in the password to give immediate feedback to the users about their password strength. You want the you want the background of the entry controls containing the password to change based on the strength. The following image demonstrates those three levels of strength: weak, good, and strong. Weak, good, and strong. Okay, उसके लिए हमने क्या किया, एक इनाम बनाया weak, good, strong का, और एंट्री बैकग्राउंड कलर बाइंडिंग पासवर्ड लेंथ. ओके, सो पासवर्ड लेंथ के हिसाब से बैकग्राउंड कलर चेंज होगा. अभी हमें क्या करना है, एक कन्वर्टर लिया, implement I value converter. क्या होता है I value converter? A binding converter does just what its name says, convert between binding source and target. Converters are implemented through I value converter. तो जो भी नाम होगा, जैसे यदि स्ट्रॉन्ग बोला तो नाम आया स्ट्रॉन्ग, तो उसके अनुसार जो भी मैपिंग होगा कलर का वो दिखा देगा. तो ये कौन करेगा, आई वैल्यू कन्वर्टर करेगा. तो आई वैल्यू कन्वर्टर इंटरफेस डिफाइंस टू मेथड्स. पहला होता है convert and convert back. Convert from the binding source property to the binding targets. Convert back converts from the binding targets UI property back to the binding source. ओके, तो दो प्रॉपर्टी होता है आई वैल्यू कन्वर्टर में. ओके, तो सबसे पहले एक इंटरफेस बना है आई वैल्यू कन्वर्टर. कन्वर्ट
is a type of object, convert back is a type of the convert. We have a three parameters. One is object, type, okay, and parameters and culture info. Total four parameters. Here is also four parameters: object, type, object, culture info. Recall that the scenarios with which we are working is binding the entry dot background color property to the data objects password strength property, which is strength enumeration. Okay, strength. Okay, the strength enumeration need to be converted to a color, so the converter needs to be evaluated strength value is provided and written a different color. Okay, so I value converter we override this methods convert and convert back. Okay, inside the convert method we have to write strength value. It's a switch case. Okay, so strength dot weak will return colors dot orange red, strength dot good will return colors dot yellow, strength dot strong we हम रिटर्न करेंगे colors dot light blue, और डिफ़ॉल्ट होगा ऑलवेज, यदि कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती है तो कलर डॉट लाइट ब्लू ही होगा. दैट्स अ डिफ़ॉल्ट रिटर्न वैल्यूज. Let's break down this code. The convert, okay, इसको फिर से सुनें. The convert method has four parameters. You can generally discard the last two parameters. ये जो दो है ना, इसको यूज नहीं भी किया तो चलता है. Last two parameters unless you have a specific reason to use them. The value parameters, okay, the value parameters contains incoming value. In this example, it's a strength enumeration. It's a strength enumeration value. The target, okay, type parameters is ignored, but you could use this parameter to validate the type of property the converter is being used with is the color. This is omitted in this example for simplicity. Okay, a switch expression. Okay, this is switch. The switch expression returns a different color based on the strength value. Use the converter in XAML. With the converter class created, you need to create an instance of it and reference it in the binding. The standard way to instantiate the converter is in the root elements resource dictionary. First, map an XAML namespace to the .NET namespace that contains the converter in the following code example CVT. Okay, CVT is nothing but converters. पहले उसको namespace. The first map an XAML namespace to the .NET namespace that contains the converter. In the following code example, the CVT XML namespace maps to the myproject.converted.NET namespaces. Next step is create an instance in the content page.resource. content page.resource के अंदर हम उसे CVT को कॉल करेंगे और उस क्लास को कॉल करेंगे strand to color converter को, और उसका एक डिफ़ॉल्ट नेम देंगे strand to color convert. Now an instance of the converter is in the resource dictionary with the key strand to convert color converter, which happens to be the same name as the type. This is typical way of naming converters, as you generally just have a single converter you reuse throughout the XAML. If you for some reason required multiple converter instances, the keys would have to be different between them. Lastly, reference the converter on the binding because the converter is is a, is in a resource dictionary. You use the static resource markup extension to reference it. The converter is assigned to the converter being the property. Entry background color binding password strength converter static strength to converter color converter. Okay, check your knowledge to display and format a value as a string in a data binding, which is the best approach. I think string format. Which type is used in data binding conversion? I value converter. Create a .NET MAUI converter. Exercise. So create convert to an image. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कन्वर्टर बनाएंगे, वेदर कंडीशन टू इमेज कन्वर्टर. तो कन्वर्टर बनाते हैं
एक हम ले लेते हैं इसके अंदर फोल्डर कॉल्ड कन्वर्टर। इसके अंदर कन्वर्टर के अंदर हम एक क्लास बनाएंगे which is nothing but C# class and name is weather condition to image converter. ओके ये एक इंटरनल क्लास है, तो इंटरनल क्लास को हम देंगे, ठीक है। अब go to the weather type. Why weather type? Using models. Target parameter, it's fine. Okay. Content page, we have a class name called, okay, इसको हम content page के अंदर डाल देते हैं. Let's suppose we have this page called bindings. Content page dot resource, content page है यहाँ पे, इसके नीचे content page dot resource बना दिया हमने, ठीक है। और इस नेम स्पेस को पहले लिख लेते हैं XML NS CVT converter. क्वेश्चन png कहीं पे लिखा होगा, चेंज द क्वेश्चन png, कहाँ पे क्वेश्चन png, यहाँ पे ये लाइन, इसको हमें चेंज कर देना बाइंडिंग कंडीशन लगा के, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, बाइंडिंग कंडीशन से हटा देना, ठीक है। तो हमने क्या किया, सोर्स बाइंडिंग कंडीशन, अब क्या किया, जो भी इमेज आएगी उस वेदर कंडीशन को चेंज कर देगा ये वेदर कंडीशन। रन करते हैं कोड को, कुछ एरर आया है। Weather condition to image converter does not implement interface. Okay, what's wrong with that? Value converter, okay, now looks good. Let me run the application again.
Okay, you can see the icon. Let me put breakpoint here quickly. So whenever we hit this refresh button, it will navigate to the converter, check the value sunny. Okay, based on sunny, we have a weather condition sunny. Okay, if it is sunny, then sunny png should come, otherwise cloud png should come. Okay, let me check sunny png we have or not. Source images sunny png, sunny is not there. Okay, that's why it's not coming at all. Sunny png we downloaded or not? Not downloaded. Okay, let me do it one thing. Instead of sunny png, can we put it there? .net or png, we'll see now. Run again. Okay, what is value? Cloudy. For cloudy, cloud icon should come. Refresh again. This is sunny. For sunny, the value here you can see .net board png is coming here. Let me refresh this again. So you can see the bindings. So in this way converter will work. So based on image to the color, if you want to change, okay, image से color पे आना है या data mismatch है, I mean to say the object is different, okay, तो उस केस में हमें कन्वर्टर का यूज़ करना है. तो इमेज से कलर, कलर से इमेज या कोई ऐसी चीज़ जो आपस में तालमेल नहीं खा रही है, बट थ्रू कन्वर्टर स्विच केस पे, स्विच केस के आधार पे, स्विच केस के हेल्प से कन्वर्टर के अंदर हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ .NET MAUI converter. So summary, so in this unit, in this topic, separate UI and logic with data bindings पे हमने सीखा है कि डेटा बाइंडिंग्स हमें लूज कपलिंग प्रोवाइड करता है. डेटा बाइंडिंग्स करने से कोड बिहाइंड कोड बिहाइंड लिखने की ज़रूरत नहीं है. हम इसे चेंज कर सकते हैं डेटा बाइंडिंग के थ्रू. दूसरा, डेटा बाइंडिंग्स करने से यूआई और व्यू मॉडल्स, सर्विस एंड रिपोजिटरी, बिजनेस लॉजिक सब सेग्रीगेट हो जाते हैं. सो यू डोंट नीड टू चेंज यूआई ऑल द टाइम. सो विदाउट चेंजिंग यूआई यू कैन चेंज एंड रिप्लेस द सर्विस and repository. So data bindings automatically synchronize the data with UI as soon as the weather data changes. और एक चीज़ और, जब भी हम डेटा चेंज करते हैं प्रॉपर्टी का, तो वो यूआई को अपडेट कर देता है. Correct. So this is all about the okay, learning under this create a UI that uses data bindings .NET MAUI. तो ये मॉड्यूल कंप्लीट होता है. द नेक्स्ट मॉड्यूल विच वी आर लर्निंग एंड दिस लर्निंग पाथ इज डिज़ाइन एंड MVVM व्यू मॉडल फॉर .NET विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यदि आपको एप्लीकेशन बनाना है तो. ठीक है, यूनिट टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, like this video, and make sure you just keeps on learning through this channel. Thank you so much.